गर्मी तो रोज ही होती है, कब नहीं होती, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। गाड़ी चलाने वाले को धूप इस तरीके से लगता है कि कोई चांटा मार रहा। आराम करने का कोई वो नहीं है। एक बार अगर ड्यूटी चालू हो गई सुबह 10-11 बजे तो रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप। जहाँ ज़्यादा जाम रहता है वहाँ ज़्यादा दिक्कत रहती है। गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, गाड़ियों की हीटिंग ज़्यादा मारती है, गर्मी से ज़्यादा गाड़ियों की हीटिंग मारती है। What happens when you have an elevated concentration of these pollutants? They trap more heat, and that actually increases your surrounding temperature. Delhi is known for its heat and its pollution. But what's less discussed is how the two collide, particularly impacting the lives of outdoor workers. In this final episode of Urban Heatscapes, we follow gig workers across the city to see what it means to spend a day exposed to both. Stay tuned. हाँ, 5 मिनट हो गए। मैम 5 से 10 मिनट तो करना पड़ता है। मैम लग जाता है, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैम झेलना पड़ता है काम के लिए तो। Delhi is home to around 23 lakh gig workers. This workforce, along with other outdoor workers in the city, are most vulnerable to the city's rising heat stress. Speaking of heat stress in Delhi, we have conducted 2 decadal analysis. In one analysis, we saw that how out of 50 occasions, Delhi has crossed the normal temperatures. It has departed from its normals at 42 occasions. And we found out that nearly 75% of Delhi is heat stressed. Delhi falls in India's composite climate zone, experiencing hot and dry summers, humid monsoons, and cold winters. Over the past 2 decades, increasing concretization has intensified heat stress, with built-up areas rising from 31% to 38%. मेरा नाम पायल है और मैं इवन कार्गो में काम करता हूँ, डिलीवरी की। 8:30 बजे आते हैं हम और फिर अंदर जाते हैं, स्टेशन पे पैकेट मिलते हैं, देखते हैं बाहर आके क्या है क्या नहीं, फिर रूट बनाते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। फिर रूट दे के फिर अगर COD पैकेट होता है फिर अमाउंट लेके आते हैं और स्टेशन में जमा करते हैं, और जो पैकेट कैंसिल अटेम्प्ट लग के आते हैं वो अंदर जमा कर देते हैं। Payal works with an e-commerce company, but many others in Delhi work in quick commerce on apps like Blinkit, Zomato or Swiggy, where fast delivery brings its own challenges. सुबह उठ के मैं जोमेटो ऐप में जाके अपनी गिग बुक करता हूँ। गिग बुक करने के बाद फिर घर से निकलता हूँ 10 बजे, मालवीय नगर जोन में आ जाता हूँ। अपने जोन में आके ID ऑनलाइन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर कहीं पर किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर बज सकता है। ऑर्डर बजने के बाद मैं पिकअप करता हूँ। पिकअप करने के बाद कस्टमर को ड्रॉप कर देता हूँ। बस यही मेरा काम रहता है, पूरे दिन यही चलता रहता है। गर्मी में दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें क्योंकि धूप ज़्यादा तेज पड़ती है। दोपहर में फिर काम करना बहुत भारी पड़ जाता है, लेकिन मजबूरी ये वाली बात हो जाती है थोड़ा, क्योंकि कुछ और है नहीं, तो जब तक नहीं है तो इसलिए यही करना पड़ता है। गर्मी में भी पसीना वगैरह तो आता ही है जी। अब 5 मंजिलों पे चढ़ना पड़ता है, कस्टमर ऑर्डर करते हैं 4-5 मंजिल जाना पड़ता है चढ़ के, और जितनी जल्दी जाते हैं उससे जितना जल्दी अगला ऑर्डर मिलता है। दिक्कतें होती हैं। कोशिश ये है जल्दी जल्दी ऑर्डर करें ताकि नेक्स्ट ऑर्डर मिले जल्दी हमें। आधा घंटा मिलता है मेरे को डिलीवर करने का। कभी कदार लेट हो जाता है, जाम में फंस जाता हूँ, इसके कारण लेट हो जाता है, तो उसके कंपनी डिफेक्ट करती है क्या देती है क्या नहीं। पेमेंट दूरी के हिसाब से रहता है। पेमेंट चाहे जितने किलोमीटर जाओगे उतना पैसा है।
क्योंकि देखो मैं जोमेटो में काम करता हूँ तो रास्ते में अदर किसी से हम पानी मांगे तो दे तो देते हैं, लेकिन कुछ लोग और गर्मी के चक्कर में कभी कभार मैंने देखा है कितने लोगों के नाक से खून निकलने लगते हैं, फिर उनको चक्कर आने लगते हैं। Already, outdoor workers in Delhi lose about 25% of productivity due to hot and humid conditions. By 2050, this could rise to around 30% if action is not taken. Climate has been a big concern for us. From the time we started till now, we have seen even the weather getting extreme during certain time of the year. We do understand that the climate affects both efficiency and work environment for these girls. But the problem in Delhi isn't just that of heat. As temperatures rise, ground level ozone, a harmful air pollutant, forms more easily. In more hot conditions, ozone formation enhances. And another reason for increasing ozone concentration is basically the increasing the precursor concentrations like NOx and VOCs. Delhi experiences high emissions from vehicles and industries, primarily nitrogen oxides and volatile organic compounds. Heat accelerates the reactions between sunlight and these pollutants, raising ozone levels. Ozone is one of the potent gas that actually leads to a trapping of anthropogenic heat or heat coming from the city, and it is a prominent gas which affects your health. This summer, Delhi saw ground level ozone exceed safe limits on nearly all 92 days between March and May. The spread of ozone pollution across NCR was the highest in 5 years. And the people who are working outside, basically, those are prone to this kind of exposure of ozone. So most of the population who resides in Delhi comes to exposure of heat, but there are population which are more vulnerable. For occupation, we take street vendors, construction workers. As per age, child and elderly population, women are the most vulnerable as per gender classification, and as per housing condition, informal settlement dwellers like JJ Bastis and homeless are the most vulnerable due to the heat stress. Pollutants like particulate matter also add to heat stress. In congested areas such as Jhilmil in East Delhi and Sangam Vihar in the south, PM 2.5 levels are especially high, exposing gig workers who spend long hours in traffic to even greater discomfort. गर्मी से बचने के लिए और क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। गर्मी तो पड़नी है और रोड पे रहना है। और कुछ ये है कि गाड़ी वाड़ी की गर्मी भी और हाइट हो जाती है। गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, गाड़ियों की हीटिंग ज़्यादा मारती है, गर्मी से ज़्यादा गाड़ियों की हीटिंग मारती है। अब गर्मी पड़ रही है तो उसको ट्रैफिक में फंसे हुए, तो जब तक वो ट्रैफिक खुलेगा नहीं तो जा ही नहीं सकते। या तो गाड़ी साइड में लगा के, ऐसा तो है नहीं गाड़ी साइड लगा के बैठ जाओ, तो काम करेंगे कैसे? चलना पड़ता नॉन स्टॉप। PM 2.5 is a combination of various chemical species. You get dust particles, you also get black carbon. What happens when you have an elevated concentration of these pollutants? So they reduce your albedo and they trap more heat, and that actually increases your surrounding temperature. So ozone and PM 2.5 both actually contributes to increasing heat stress in the cities, and that we have seen often in Delhi. This is a trend observed across several of Delhi's industrial areas, where other factors add to the heat stress, intensifying the urban heat island effect. प्रदूषण का तो दिक्कत होता ही है, बहुत दिक्कत है। ऐसे नहीं, कई कई जगह मैंने देखा है कि घुसते ही ना आंखों में जलन मचने लगती है। मैं बता रहा हूँ, आप ये झिलमिल में चले जाना, चिंतामणि इंडस्ट्रियल एरिया है झिलमिल का, वहाँ पर तांबे की फैक्ट्रियाँ हैं, कॉपर बनने की फैक्ट्रियाँ हैं। अब उस फैक्ट्री के आगे अगर 5 मिनट खड़े हो जाओ तो मान जाओ मैं, उस फैक्ट्री में इतनी तापमान है कि बाहर तक आता है।
So, in our analysis, we found something really interesting that nearly 36% of the total heat stressed area in Delhi gets heated up in the month of April itself. These areas include a lot of industrial areas. These areas are largely devoid of any green blue infrastructure such as trees, parks. They do not have any safeguard like this. Also, the material that they use in the roofs is basically fiber sheets, metal sheets or concrete. These industrial areas are also air pollution hotspots. So all this tin roof building structure that reduces your albedo, and once there is a reduction in albedo, it means that it is trapping more solar radiation. And on top of that, if the pollution is there, so pollution layer actually deposit on those structure and it enhances the trapping of the heat. For gig workers, this means every day is a struggle through a difficult city. Exposed to heat, exposed to pollution, while racing to meet delivery targets. 50 से 55 पैकेट करेंगे तो 18 या 20,000 सैलरी आएगी। 5-6 घंटे लग ही जाते हैं और छुट्टी वगैरह करेंगे तो फिर मैम कम आएगी सैलरी। पैकेट कम करेंगे तो भी कम आएगी। काम में तो ऐसा है जी, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलता है। ये कि कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ये होता है। तो 12-13 घंटे करते तो इतना हो जाता है। 1000 रुपये का काम तो मान ही लो। रेस्टोरेंट वाले तक नहीं देते पानी, पानी नहीं है हमारे पास। रेस्टोरेंट तक मना कर देते हैं, अपनी खरीद के पीनी पड़ती है। 200-200 रुपये का पानी का हो जाता है हमारा। नॉर्मल खाएगा नहीं, वहाँ पानी तो चाहिए ही चाहिए। नींबू पानी, पीने के लिए पानी, ये सब चाहिए ही चाहिए। कि 20 रुपये की 1 लीटर बोतल आती है, 1 लीटर तो एक बार में ख़त्म। कभी 3-4 बोतल तो मान ही लो आप। Delhi has a heat action plan, which has led to installation of water ATMs in many places. However, most of these could only be seen in central Delhi. Across much of the city, affordable drinking water remains difficult to access outdoors. For this vulnerable population, there are two types of mitigation measures. First is the immediate response, like provide ample amount of shading to the population, drinking water facility, sanitation facilities, and second category is the long-term measures like enhancement of the blue-green infrastructure. It will provide a safeguard from the heat as well as the air pollution. In the absence of strong state action, it's citizens who have stepped in to provide basic services which can bring relief from the heat. Rahim is one such citizen who regularly fills up matkas with drinking water in his area. इंसान भूख बर्दाश्त कर लेगा, प्यास नहीं बर्दाश्त करता। या तो मजबूरी में उसको पानी नहीं मिला तो खरीद के पिएगा। हम सब खरीद के पानी पी नहीं सकते, है ना। प्यास लगती है, थोड़ा बर्दाश्त करते, फिर देखते गाड़ी चलाते चलाते कहीं पिया हुआ है तो रोकते हैं, पीते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा जब मैं पानी के लिए तरसता हूँ तो इन लोगों को भी पानी, तो इसलिए मैं रोज सुबह शाम उसको भर के आता। For gig workers and all other outdoor workers in Delhi, heat and pollution are now occupational hazards they must adapt to. धूप पड़ती है लेकिन जाते हैं, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। शाम को थोड़ी रात मिल जाती है, शाम को करते हैं। जैसे भी 12 से 4 बजे के बीच तक में धूप जाते पड़ती है, तो क्योंकि रात के लिए फिर बढ़िया रह जाता है ना कि शाम को 6 से 11 बजे तक काम थोड़ा होता है हमारा। But for women, who are one of the most vulnerable groups, adapting is not always easy. सेफ्टी का आपको कभी डर लगता है कि आप अकेले डिलीवर करने जा रहे हैं अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग घरों में? नहीं मैम, ऐसी कोई मेरे को डर वाली बात नहीं है। हम दिन में कर लेते हैं, शाम को नहीं करते हम। But the solutions that address the working conditions of the most vulnerable are ultimately the ones that benefit everyone. Even Cargo, a logistics company that trains women as delivery workers, is building such solutions. We have incorporated or perhaps introduced certain things that we would put a cap on the weight that a girl would carry, which perhaps was not there before. Not for girls, but for any gig worker. We have had cases where a girl has started feeling unwell, and which largely has been due to weather, but then she has been attended to. 5 to 7 kilometers is the max that they deliver. So from that perspective, they can always get back to the station.
A station has a place for them to rest. Station is a place for them to have water. Station is a place to for them to use washroom. So I think those things were the ones that Evan Kaku focused on, which we call gender inclusive infrastructure. And obviously everyone can use it, including boys. Steps taken by individuals and private organizations are important but limited. To meet this growing crisis, it is the city itself that must respond urgently, because Delhi is only getting hotter and more polluted each year.